Bismillahirrahmanirrahim. So सबसे पहले I'll just quickly go over all the quizzes. ठीक है? So make sure you know all this stuff. A lot of stuff will come from here, of course, with a little bit some differences and all that, but there is nothing else, right? This is your material precisely, right? So make sure you understand, because your questions there, they'll be conceptual. So make sure you understand these things, right? Instead of just merely memorizing the points. इसमें जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई थी, that was cloud models versus cloud service models, right? So make sure you understand that. Again, it's straight from the quiz, but yes, terminology was a little bit a little bit of you need to pay attention to that, right? But besides that, it's pretty straightforward, right? जो जी जी पूछो, किसी ने अगर सवाल पूछें, just interrupt me please. Yeah, it was again. Let me just open it. The cloud models are not IaaS, PaaS, and that one, right? And we can take a look at that as well right now. ठीक है? ये वाले थे public cloud and ये सही है. ये cloud model, yes, it's telling you very straightforward, right? Straight. This question was straight from this one, right? So, इसमें if you just look at it, I mean, I have reworded just maybe a little bit, right? ये आपकी जो वो हैं slides हैं, right? आपकी जो sorry slides हैं. I try not to have any kind of trick questions. Straightforward questions हैं इसके अंदर, right? Just a moment. So make sure I mean cover these points, right? अच्छा, ये वाला point था, lot of people miss this one simply because अब ये देखो, अब इसके अंदर भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. ठीक है? This was question from here. Hiability and scalability. You should go and take a look, right? Don't write stuff. Go over there. It was basically from this, right? Let me just show you where it is. Open कर रहा है. So this question was again straight from over here. Look at what specifically. It's specific to the cloud, right? Cloud benefit. When we talk about cloud benefits, this is specific to the cloud. I'm not asking generic, right? This is in the cloud. What's so special about these things, right? So understand this again. Read these things, right? एक और वर्जन में मैंने सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस का पूछा था. रीड दीज थिंग्स प्रॉपरली. ठीक है? Horizontal scaling versus vertical scaling, we discussed this again straight from the again notes. This one was, you know, cloud service types are coming now. So it is mentioned what is cloud models and what are cloud service types, right? The cloud model comparison, and those are cloud service types, right? IaaS, PaaS, and SaaS. And I should tell you also, I mean, a service is offered to you in what way? IaaS, PaaS, or SaaS, right? So that tells you this. I mean, it should be a service, right? Platform as a service, software as a service. So these are service types, right? Well, model is totally different, right? How this service is given to you, they are come in different models. Just from that, from the name, you can understand the conceptual part of this. Horizontal scaling versus vertical scaling. ये मैंने आपको उसमें से दिखाया था virtual machine scale sets में, right? And everywhere else, wherever scaling is, primarily you have basically horizontal scaling, right? Not vertical scaling. Automated scaling is horizontal scaling. Vertical you have to do manually. We discussed this extensively in the class as well, right?
This was another version of the quiz. Again, I picked the same thing, just the other ones, right? VM scale sets, VMSS, right? I mean, we did that in the class. आपको मैंने VMSS के साथ मैंने उसके points करके दिखाए थे उसके सारे how it is done. We did the exercise in the class actually. और ये notes के अंदर भी है आपके actually. अगर notes के अंदर देखो, I showed that actually. Notes में ज़रा आगे से आती है, देर से आती है. But उसके अंदर generic explain किया हुआ मैंने. Let me just open it up. That one as well. ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था शुरू में. ये देखो, ये दिस वन इज स्ट्रेट फ्रॉम ओवर हियर, राइट. ये मैंने एक्चुअली शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था बिकॉज आई वाज शोइंग दैट इन द क्लाउड कंप्यूटिंग अबाउट द स्केलिंग एंड ऑल दैट. अगेन एवरीथिंग इज स्ट्रेट फ्रॉम द नोट्स. कोई ऐसी नथिंग रियली स्पेशल, राइट. ये भी डाला हुआ था उसके अंदर. ये मैंने आपको क्लास के अंदर दिखाया था, ये वाली चीज़. उसके अंदर आप सारी वो दिखाते हो बेसिकली. इंशाल्लाह मैं क्लास अल्को मैंने उसका पढ़ाया नहीं है सच. डोंट वरी अबाउट इट. मैंने उसका ऐसा सच ना नोट्स के अंदर है ना मैंने पढ़ाया. बट आई कैन डिस्कस दैट वन. लेट मी फिनिश. वी कैन गो इनटू स्पॉट इंस्टेंस. आईएएस का मैंने आपको बताया था. देखो, प्राइमरीली आईएएस जो है हमारी, वेयर यू हैव एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन्स है. ठीक है, वर्चुअल मशीन इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली थिंग दैट वी कंसिडर आईएएस. तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन है स्पेसिफिकली? हाँ हाँ, बेसिकली आईएएस का मैंने बताया था, राइट, कि जनरली हम तो वैसे यूज़ करते हैं इन माइग्रेशंस. ये आपको आगे भी आएगी बेसिकली, वेयर यू वांट टू यूज़ आईएएस एंड पैस. लेट मी सी, ये था मेरा ख्याल है कहीं पे. तो ये उन्होंने कंपेयर दिया हुआ हाई लेवल, राइट. लेकिन मैंने इसमें आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें बताई थी. दैट वाज कि आईएएस जो है इसके अंदर मैंने कहा था अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू आर फोर्स टू यूज. मैं भी आ रहा हूँ उस क्वेश्चन की तरफ. आई थिंक इट इज कमिंग इन द नेक्स्ट क्विज. मैं लेट मी फिनिश दैट. सही है. सो गो. यहाँ पे हमने बताया था फॉल्ट डोमेन्स एंड अपडेट डोमेन्स, राइट. लॉट ऑफ पीपल डिडंट डू इट प्रॉपरली. लॉट ऑफ पीपल मिस्ड इट. अगेन व्हेन यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, डोंट गिव लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस. टू द पॉइंट यू कैन एक्सप्लेन these things, right? Fault domains, update domains, they are part of VM availability set. So you can say these two functionalities are part of availability set. And fault domains, basically they allow you to recover from a हमने कहा था 3 fault domains हो सकते हैं because there are 3 sources of power, networking and cooling, right? So they allow you to recover from a failure of क्या कहते हैं power or networking or cooling, right? As long as you have VMs deployed in multiple fault domains, right? That shows precise understanding, right? You are wording in your own way, but it's giving precise understanding what fault domains are used for. Update domains are exactly what the name says, right? That while your application or host is updating, it allows you to ensure that all instances of our applications are not updated at the same time, right? Each host or each where your applications are or VMs are, right? They are patched first, they're brought up, and when everything is ready, the next 2 instances, the next update domain will get updated, right? So it allows you to ensure
whole application doesn't get updated at the same time, right? So that's how their things done. So the same, if you focus think about it, ये आपको almost similar kind of concepts, what they do themselves underneath of PaaS, right? So they have surfaced these kind of functionality in these applications as well, in the IaaS as well. Okay? But always again, जो मैंने कहा था, understand that it's not about memorizing. Understand the issue at hand, right? Why something is being used. Let me see. Availability zones, usage benefits. Again, what is availability zone? ये मैंने बताया था. ये मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको when you talk about cloud architecture, right? Azure architecture and components के अंदर हमने ये वाली पिक्चर थी basically. That's what you had to describe, right? ये मैंने this question is straight from over here, right? इसमें अपने बताने कि एक region के अंदर multiple data centers, each instance of data center is considered an availability zone, right? That's what it is. Physically separate data centers within the same region. आप ये लिख दो, however you want to put it, you need to show that you understand availability zone is a data center inside a region. Yeah. तो usage ये मैंने आपको दिखाया था क्लास में भी कि I can have a VM which is running in two availability zones, and it creates, and of course becomes double because it's replicating. Things are replicating, right? And benefits is basically it allows you to recover from a data center failure, right? ये हमने क्लास में बात की थी, और इसके opposite हमने पढ़ा था availability set, which allows you to recover from a VM failure within the same data center, but in the availability zone, it allows you to recover from a data center failure. So concepts are same. It's just that in an availability set, आपकी application is deployed across two fault domains, so it can recover from a failure within a single data center, right? But if the whole data center goes down, then you need availability zone to recover from that. इसके अंदर डेटा सेंटर रिक्वायरमेंट्स आपका जी जी हम्म, जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली. Of course, I mean, understand this. Okay, your VM instances must be three also at least, right? To use those three fault domains, right? अगर आप कहें जी तीन fault domains है, VM एक है, it doesn't mean anything, right? तो आपकी अगर VM भी तीन होंगी, then you can recover. वो generally ये होता है कि वो VM will be only 5-10 VMs होंगी that you spread across the three fault domains, और आपकी application ऐसे होगी, right? And the idea is again you are deploying an application that is cannot be moved to PaaS. Yeah, it's a lift and shift migration किया आपने भी उसकी 10-12 VMs चल रही हैं, maybe you will move later on. The idea is that they're giving you the flexibility of running VMs, the whole application, whole service across these three fault domains, right? तो ये idea है. तो जैसे इसमें it's pretty straightforward. इसमें कोई again similar from over here. It's basically I could have made the question a little bit simpler, but it was basically you can put some of these points over here. Requirements, they're connected through fiber optic network, independent power cooling networking, so on and so forth. IIS ये क्वेश्चन था, we discussed multiple times in the class, right? ये हमने कहा था कि what forces you to use IIS, right, instead of platform as a service. And इसके अंदर मैंने बताया था कि दो चीज़ें हैं which you are forced, right? कि आपकी application है, even though it's available in PaaS like SQL or it could be anything, right? But you need to install some software on the operating system. In that case, generally you must use IIS, right? That is one thing. So second one was also
it's a third-party software, and the software vendor says we don't support PaaS, so you must use IaaS, right? So in that case, you must use IaaS in that case. Again, nothing good or bad, but it's just the scenarios where you would use, right? VM scale sets, again, ये scale sets है, it's straight from over here. You can provide brief points, right? Scales out, scales in, and provides you horizontal scaling, right? Uh, and you have to do manual scaling yourself if you want to do क्या कहते हैं if you want to do a bigger size करना है आपने. इसके अंदर मैंने clustering और virtualization, again lot of people miss. Clustering is not a cloud specific thing. ये मैंने शुरू में बताया था आपको. Clustering जो है, और ये मैंने रिव्यू भी किया था इस क्विज का, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वर नॉट देयर इन द फर्स्ट क्लास और समथिंग, राइट. फर्स्ट कपल ऑफ क्लासेस, ये हमने 2 हफ्ते के बाद तीसरे हफ्ते हमने क्विज ली थी, बट स्टिल आई डिड द रिव्यू फॉर दिस वन. Clustering is essentially, right, a technology to allow recover from a single node failure. इसके मैंने बताया था क्लस्टरिंग का सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन है, and essentially what happens is both nodes are giving pings to each other, yeah, heartbeats. They're checking each other, right? So if one node doesn't get okay from the other one, it will take the ownership. So, and the other thing was, this is basically high level clustering. We didn't have to go too much in detail, just high level where clustering is used. और फिर मैं क्लास में एक्सप्लेन किया था that clustering must be software must be cluster aware. So you register the software with the clustering service, और उसे कहो ये मेरा software है, please look for this service. When you fail over, please bring it up on the other side as well, right? इसके अंदर ये IaaS था, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, एंड इसमें बताया था क्यों, व्हाट आर द 2 रीजंस, राइट. और ये मैंने अगेन आई एम्फसाइज दिस क्वाइट अ बिट इन द क्लास. इसके अंदर मैंने बताया था कि इट्स IaaS एंड द 2 रीजंस आर यू आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम पैचिंग एंड अपडेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, पैचिंग, अपडेटिंग, अपग्रेडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकेंड वॉज सिक्योरिटी, यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी. अब जो कुछ भी कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर इट्स सिक्योर, राइट. Because by default services are secure, PaaS services are, but you can add on certain things, but this one is inherently, you can make it unsecure, right, by opening various ports and all that. So you have to make sure you're doing this properly. ये मैंने बताया था, इसके अंदर we discussed this, कि people were doing remote desktop services and on, right, and you can open certain ports directly on the internet, and there was cause of some of the biggest hacking attacks on the environments. So this was again, availability set is standard, normal, nothing special over here. Let's go over the case वाली की. Security and security was the second one. First one was OS upgrade, patches, updates, right? Everything. Yeah. And it should be obvious, right? आपके पास PaaS के अंदर, this is the first thing they take away from you. वो कहते हैं हम आपको underlying operating system will take care of it. No need of updating, patching, anything, right? We will take care of everything. Just concentrate on your application. That's the fundamental difference, right? हमने उसके अंदर भी देखा था, app service के अंदर भी we saw something very similar. We don't have any access to the operating system underlying. वो पूछ लेते कौन सा operating system, but that's about it. So the next one was benefits of ABD. Let me open the Nodes PM.
इसमें benefits are over here also. You should read these things. ये मैं आपको जो links दे रहा हूँ, right? It's very critical कि क्या what is AVD, क्या benefits हैं इसके, and many things, right? You should make sure you go over these things, okay? क्यों enhance security है, resource, and ये video है. These are part of, it's like your notes जो हम class में कर रहे हैं. These things should be part of your studying, right? Make sure you do that. Lot of people miss lot of मेरे कई questions हैं which are based on this. Make sure you cover these areas, right? You should know what these things are and what they're talking about. Even at a high level, for example, just from over here, you don't need to understand everything, right? Centralized security management, right? User desktop. आपकी central वो है क्या कहते हैं? Centrally deployed works desktops हैं. So you can centrally manage all the security, right? You can do MFA, multi-factor authentication. मैंने आपको बताया था, it's a cloud-based SaaS plus IaaS service, right? So it can do MFAs also, right? Also, you can do role-based access control. Who can access what, right? ये भी मैंने question पूछा था, but lot of people missed, right? Why no data is left behind? Actually, मैं देखूँ question is इसमें हाँ ये मैंने मेरा ख्याल अगली क्विज में पूछा था शायद, मे बी नेक्स्ट वन में ये आ रहा भी आगे इसका. हाँ ये आ रहा भी क्वेश्चन आगे, राइट? सो ये all these questions coming from slides and these links, right? Multi-session AVD is coming from over here, right? Multi-session. It talks about this. Again, if you study the notes, study these things, plus what we are going over in the class, right? Some of the practical implementations, right? Implications of these things. Multi-session, here it talks about multi-session, right? This was straight from over here. और इसी के ऊपर जो second question ये वाला, right? इसी के ऊपर जो अगला question था, benefits of AVD, ensure no data is left behind. This one was from over here, right? Data left behind, it is straight from over here. भाई आपका जब हार्डवेयर ही, आपका जब डेस्कटॉप ही क्लाउड के ऊपर चल रहा है, तो I mean there is no way somebody would leave their data on their own personal computer. आपका पर्सनल कंप्यूटर और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट इज रनिंग इन द क्लाउड, अब जो कुछ भी करोगे, टर्न ऑफ कर दो, जो मर्जी करो, डेटा सिटिंग ओवर देयर इज नो वे यू कैन लूज डेटा, राइट? तो एक्चुअल डेस्कटॉप एप्स आर ऑल रनिंग इन द क्लाउड, राइट? सो यू डोंट रियली लूज एनीथिंग. कंपनीज को पहले यूजर्स के डेस्कटॉप बैकअप करने पड़ते थे, कई चीज़ें करनी पड़ती थी टू इंश्योर सारा डेटा जो है दैट इज नाउ इफ इट्स सिटिंग इन द क्लाउड ऑलरेडी, the whole desktop, right? You don't have to worry about those kind of things, or you minimally worry about those things, right? ये multi-session था, ACI, we covered ACI के डिटेल हमने पढ़ा भी था, इसके अंदर लिखा भी है मैंने ACI के अंदर. ये ACI के there's plenty of information. हमने बताया था कि simplest way to run a container, right? Without any, so application हमने चलानी है, ACI is what is used for, ठीक है? So single container, it's also, ये मैं अपडेट करूँगा वैसे, और a group of containers, right? और वो group of containers are container groups, ये container group है. और इसके अंदर if you go into these ones notes, इसके अंदर you will see container groups cannot be deployed. हमने पढ़ा था क्लास में भी, through portal. You must do Azure command line to deploy container group. But regardless, main thing is आपको एक बड़ी simplified installation है, simplified configuration है container और container groups. ये container groups के ऊपर, and you can go into this one as well. It talks about that, right? Compare VM versus containers. This is all. हाँ ये इसमें मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रेशन कैपेबिलिटी है. लेट मी सी इफ इट्स रिटन ओवर हियर आल्सो.
अभी देखो इन्होंने लिखा हुआ है ACI provides some of the basic scheduling capabilities, right? Let me see if it's written over here. यहाँ पे इस पे इसके अंदर लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, इसके अंदर मैंने बताया था इट प्रोवाइड्स ओनली रीस्टार्ट ऑफ द कंटेनर. So it has multiple modes of how do you want to restart, right? तो manage the life cycle basically. आप कहते हो जी आप रीस्टार्ट करो ऑन फेलियर, रीस्टार्ट करो ऑन नॉर्मल एग्जिट, और डोंट रीस्टार्ट. दैट्स ऑल इट डज, राइट? सो इट चेक्स फेलियर है, इट कैन स्टार्ट. और आप कहते हो नहीं फेलियर पे नहीं, अगर नॉर्मल एग्जिट हुआ देन यू कैन रीस्टार्ट, तब आप कर सकते हो. और उसके बाद आप कहते हो कि जी डोंट रीस्टार्ट. तो मैनेजिंग द लाइफ साइकिल टू स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग के ऊपर वो प्रोवाइड आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू डू समथिंग, राइट? बट दैट्स अबाउट इट. It doesn't do anything else. VM versus containers. This is again from the compute. Let me just make sure this is over here somewhere. Yeah, VM versus container. It talks about सारा operating system है आपके पास इसके अंदर, सारा कुछ है. क्या यूज है लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेशंस के लिए होता है, दैट इफ यू हैव अ VM रनिंग यू जस्ट वांट टू bring the VM into the cloud, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है. और सर्वर है जिसमें लिनक्स और विंडोज़ इस्तेमाल होती हैं. दिस इज़ ओनली फॉर माइक्रो सर्विसेज. आई मीन इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, राइट, यू हैव पैकेज योर एप्लीकेशन, सो दैट्स व्हाट इट इज़, राइट. और आपको मैंने बताया था वर्चुअलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स इट मेक्स योर एप्लीकेशन फील दैट देयर इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. और orchestration से it makes sure that you have proper scalability, it can scale, resiliency, through failures it can come up, and so on and so forth, right? So application and services packaged in a container, right, that sits on top of operating system. Or multiple containers can be sit on one host. That means you are talking about that you can deploy many applications, right, over a single host. They can all share the same operating system, nothing special. आपकी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, कुछ भी है, दे रनिंग ऑन अ नॉर्मल होस्ट, राइट. किसी किस्म की एप्लीकेशन है आपके, तो क्योंकि बिकॉज इट आस्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, व्हेन यू डिप्लॉय कंटेनर्स. So as long as operating system is fine, you can deploy any kind of container with any kind of application on it, right? What is the first? हाँ नहीं, वो हम उसका आर्किटेक्चरली हम बता रहे हैं उसके अंदर क्या कुछ जो कंटेनर्स हैं, हाउ द डिप्लॉयमेंट हैपेंस, ठीक है. वी आर जस्ट पुटिंग दैट एस्पेक्ट इन प्लेस. वी डोंट हैव टू हैव क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो हम उसका एक डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि व्हेन यू आर पैकेजिंग दैट टू द रिक्वायर सेपरेट VMs, नो वी आर सेइंग दे ऑल कैन. अब वहाँ भी एप्लीकेशन यू कैन डिप्लॉय, बट ईच वन यू हैव टू गो एंड डू इट योरसेल्फ, राइट. इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग. एंड देन व्हेन यू डू दैट यू हैव टू डू इट. अगर आपने स्केल करना है उसको, व्हाट्स स्केलेबिलिटी. आपको एक और VM के अंदर अगर आपने रेजिलियंसी चाहिए, आपको एक और VM में जाके वो करनी चाहिए, आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, आपको एक और VM के अंदर जाके डिप्लॉय करनी है. इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. वर्सेस क्या कहेंगे, मेरे कंटेनर्स नहीं बनाते जाओ, आपकी बड़ी VM है आप बनाते जाओ, मल्टीपल डिप्लॉय हुए हैं. तो आई मीन द इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस अगर आपने एप्लीकेशन को स्केल करना है ऑन अ VM वर्सेस कंटेनर्स. But yes, your original point is very valid. Yes, you can do the same thing, but they are all using the same host. So यहाँ पे the context is a little bit different in the context of आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, they don't have to be sitting on a separate machine. They all can sit together and all that, all different kind of applications. But yes, अब वहाँ पे जो है painful part जो है, अगर आपकी एप्लीकेशन है, आपकी सर्विस है, you have to deploy certain things, right? You have to deploy, configure the service and on and all that, right? यहाँ पे you are just deploying the container, you are dropping the container and things are fine, right? So it's very very simple and straightforward. So but yes, I mean yes, वहाँ भी single host है and applications can do it, right? But यहाँ पे वो emphasize करने की कोशिश की है उन्होंने कि application और services जो भी कुछ कर रहे हो, I mean you don't have to have separate machines for that. I mean, I can probably revise this one, right? It's not very clear point the way they have written it, but I'll revise this one. Okay, what does it mean to be single host? इसे मैंने आपको बताया था कि AKS के अंदर जिस तरह when you're deploying an application that uses Linux या Windows, तो उसके अंदर आप बता देते हो कि मेरा कंटेनर है, it requires Linux और Windows.
और उसके अंदर AKS के अंदर you have mentioned already that my this pool of host is Windows, this pool of host is Linux, right? So it deploys this to the appropriate host, and you can force it to deploy on a specific host, right? So you do those kind of things as well. तो उसमें अंदर ये बट डोंट गो इनटू टू मच डिटेल्स ऑन दिस वन. बट मेन चीज़ है यहाँ पे you can put whatever points conceptually that comes to your mind. I'm not going to put this specific line, but understand the concepts, what they're doing and all that. What we have discussed this quite a bit in the class. वो देख लेना आप. और ये मैंने एक पॉइंट आपको आर्टिकल दिया था VMs और कंटेनर्स का. दैट आर्टिकल शुड बी रेड. दैट्स अ वेरी वेरी नाइस आर्टिकल. एंड आप रीड कर लेना. कंटेनर्स वर्सेस VM. They've gone into very specific detail. तो high level points हैं. Maybe I can provide a link of that article over here as well. ACI containers are purpose of control plane, and this is again straight from over here. इसे मैंने बताया था कि कंट्रोल प्लेन है जिसके अंदर ये lot of people got this properly. इसमें application slash containers, right? So this is fine. Control plane इसके दो key components हैं. This is basically right from over here. Lot of people got this properly, right? So you don't have to go into too much detail. That's all what I was looking for, right? That you understand these are core components. यहाँ पे सी core services चल रही हैं. If you have put all these some other things as well, very well, right? It's added thing that you understood that क्या services run कर रही हैं and how they're talking to each other. But that's all I wanted to ask कि क्या चीज़ें यहाँ पे. Then you come into app services, right? Uh, uh-huh. The pod can contain one or more container. ठीक है. तो it deals with pods. इसके अंदर कंटेनर की नोशन एज सच नहीं है. पॉड के अंदर पॉड की डेफिनेशन आप बताते हो क्या कंटेनर है एक्चुअली. ये कौन सा इमेज आप इस्तेमाल कर रहे हो. एंड हाउ एंड पॉड कैन हैव. तो कंटेनर ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे हमारे ACI के अंदर दीज आर पॉड्स एसेंशियली इन AKS. ठीक है. तो इट्स नॉट अबाउट कि डिफरेंस है. पॉड इज बेसिक डेफिनेशन that holds that says how many which kind of images or which kind of containers will be running as part of this pod, right? So that's what it is. तो आप उसके अंदर एक डिफाइन करो, आप उसमें मल्टीपल डिफाइन करो, इट विल रन ऑल ऑफ देम टुगेदर. ठीक है. तो when it is one, it is just one container but provides lot of other information. इसको कितना CPU चाहिए, कितना RAM मैं दूंगा इसको, and what's the scalability and all those things, right? Which container definition does not have all of that. The pod has all those details as well for the containers, right? So you can have one container, you can have multiple containers in a pod. So when you have one container, then it is just one container, right? Then it will be equivalent, sort of equivalent, right? Plus the orchestration that you have provided already. The pod provides the orchestration plus the image plus its orchestration details to the Kubernetes, right? Whereas the container doesn't have. But I mean, if you look at purely from the service running, yes, it is equivalent when you have defined only a single pod, a single container, right? Yes, it's identical at that point. अब ऐप सर्विस के अंदर जो मेन चीज़ है, right, that it is for HTTPS based services, right, primarily. So we have इसके benefits जो थे ये थे usage and benefits, right? And ये चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को, ये चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को कि these are ये from grouping perspective, right? From grouping perspective only, right? I don't want to resource groups के अंदर the difference. So resource group is to group multiple Azure resources, जबकि यहाँ पे pod या container groups are to group
group multiple containers, right? So I don't want to compare. वो एक Azure के साथ है, यहाँ पे ये container service से related है, but you get the idea, right? We are grouping multiple things. Yes, right? अब यहाँ पे it talks about how do you want to manage them, how do you want to, उसका जो life cycle है of those containers will be together. That is the intent, right? Whereas you don't have such thought process or such concepts in resource groups, right? Okay, whatever is happening to one will something happening to other one as well, right? तो उसमें वो चीज़ नहीं, उसमें सिर्फ ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट है फॉर द पर्पस ऑफ security and access control and management, right? Who will manage them, who has access to these and all that. यहाँ पे it's a sort of different things from container, but again वो एक grouping का एक fundamental standard concept which can be applied to anywhere, right? So you can say कि yes, we are grouping them. Azure resources grouping is resource group. यहाँ पे grouping है. Yes, it is sort of a grouping, right? But purposes are very different according to your application and needs. Over there, they have different, security, isolation boundary, and management boundary. जो आपकी का resource groups हैं. Yes. यहाँ पे next, let me see. ये मैंने बता दिया already. Let me see what else is there. Yeah, I'm purchasing already same question what I gave in the other on the other version of the quiz. AKS cluster. This is done. This is done. So yeah, it is again same question. I just have worded differently. Nothing special. Again, this is what we've seen already. Container groups usage. This answer was pods, right? This was again ये सवाल यहाँ से था, ठीक है? Container groups are collection of containers. They're scheduled on the same host machine, right? They run together. Life cycle, resources, network storage, वगैरह, they will share, right? और generally इसका usage was this, right? कि आपके पास ये दो containers हैं और ये front end service है, ये back end service है, और इसके अंदर basically this guy from this is calling this one the back end one, right? And it's storing some stuff in the file, it's storing some stuff in the files. Both are going to the, so they're sharing the same data, right? The same storage basically. This happens to be going in a different drive, but they can share the same drive, same storage, and same everything, right? And in the end, आपको नजर नहीं आ रहा ये वाला, this is the only guy that is exposed, right? This guy calls internally this one on the internal port. ये दिखाया हुआ कि this one is the only one that is exposed outside, right? ये public IP दिया हुआ port 80 दिया हुआ इसको, for example, right? But this one is not exposed outside. ये internally calling हो रही है most इनकी. And this is the host being, this is a PaaS service. Your host is not visible to you, right? But main thing is, of course, it's running on a same machine. And the idea is they run on the same machine, right? They mentioned it already that they both run on the same machine, right? On the same host machine. So कभी कभी question आता है कि yeah, is it possible, can we put them on different machines, right? For scalability reasons and all that. No, you cannot, right? They get a host container group gets scheduled on the same host machine. Then app service, again, this is if you look at app service, what kind of apps? Let me shut this down just a moment. Common type of application, again, nothing special, right? All these things are lot of things I just right here. I got the wording even from over here also. Idea is that you guys understand ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, right? This is the important part. What this thing is used for, right? और ये मैंने इसमें किया था, इन्होंने usage और benefits बताए. Uses थे, यहाँ पे benefits थे, right?
VM containers, it's from the same slide, nothing special, just worded it differently. Common types of application that can be hosted in app services. Ye wala is from over here, right? Idea was that this is anything basically HTTP, HTTPS. And of course, you have the web jobs as well. Primarily, any kind of background service that is running, whatever, right? You can do it over here. Let me just go over that. Quiz number 3. This was the networking one. Again, we covered this in the class. In the class we cover कराई थे, but just for the sake of revision. VPN मैंने बताया था, ठीक है? VPN is used under what circumstances? Is primarily when you have one network in Azure that needs to connect to anything else off of Azure, ठीक है? On premises, Azure to AWS, Azure to OCI, Azure to anything else is VPN. Also Azure to Air, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा emphasis नहीं किया. Azure to Azure, where other Azure is also owned by somebody else who will not allow you to peer, and generally third parties will not allow you to peer. They will also force you to do VPN over there. But primarily यहाँ पे आप कह सकते हो Azure to anything else is VPN, right? Key requirements to set up VPN. ये मैंने क्लास में काफ़ी दफ़ा बताया भी था, and we did this in the revision. मेन चीज़ है, मैंने कहा था दो आपके पास VPN appliances होनी चाहिए, और या VPN appliances या VPN gateways, whatever you want to call them, right? And they must have public IP address. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, let me just open the उसके let me just go into where the networking part is on this one. Here is very straightforward, right? यहाँ पे under what circumstances this is Azure cloud to non-Azure network, right? That's it. Azure to non-Azure network. That's all you have to provide me, right? There are 4 things, right? There are 4 points I mentioned, 3 or 4 points. I'm opening it up so you can see this one as well, right? Just a moment. VPN के लिए मैंने आपको बताया था, right? You have to have 2 appliances on both sides, right? With a public IP. इसका पब्लिक IP आपको चाहिए, इसका पब्लिक IP आपको चाहिए, ठीक है? मैं कहता आपको दोनों का जो VPN appliances है उनका पब्लिक IP चाहिए. उसके बाद मैंने बताया था सेकंड चीज़ वाज कि आपको you need to share the IPsec parameters, right? IKE parameters you have to exchange, ठीक है? You have to exchange. The basically जो encryption है इसकी, encryption and hashing algorithms, you don't have to know these, लेकिन whatever the parameters are, we saw this in the class. Basically encryption and hashing algorithms, you can mention this, right? You can say IKE parameters or IKE hashing and encryption parameters, right? Third thing, let me just write it down also. हमने बेसिक कहा था कि आपने VPN appliances on both sides, on both network with public IP addresses, ठीक है? फिर हमने कहा था कि exchange, IKE, encryption and hashing algorithms.
ये मैंने बताया था कि दिस इज़ बिकॉज कि आपने अगर एल्गोरिथम इस्तेमाल करो, उससे पता हो आपने कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हो टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, राइट? कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो टू हैश दिस थिंग, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? कि आप खुद उसका हैश कंप्यूट करो तो हैश शुड मैच if data is not changed, right? This is the purpose of hashing, to make sure something is not changed. हम इंटरनेट से कुछ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हैं कभी पर, दे हैव द हैश कीज टू मेक श्योर, अगर आपने खुद हैश चल यू कैन चेक, राइट, कि nobody has modified this one, because even a bit changes, it changes the hash considerably, right? Exchange होगा I की hashing algorithms. Then what else is next one is yeah, exchange exchange uh, pre-shared key, right? That was the important one, because now you have to decrypt on both sides, so you need to know the key that will be used for decryption, right? And last was exchange um, local IP address space, right? ये मैंने बताया था कि here is this, ये local address है, आप उसमें configure करोगे for this guy, and these addresses you will configure over here. This is for routing purposes, ताकि जब आपकी traffic भेजे it should know कि VPN gateway will pick up the traffic hosted for these addresses, और यहाँ का VPN gateway will be configured with this one, right? So when anybody tries to send the traffic, it knows that this traffic will come to VPN gateway and it'll send it over here, right? So ये जब मैं इसमें ये वाला एक्सचेंज, ये वाली एड्रेस स्पेस जो है मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ, और ये वाली एड्रेस स्पेस जो है मैं इधर कॉन्फ़िगर करता हूँ, राइट? यहाँ पे VPN गेटवे के ऊपर, ठीक है? हाँ, इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, ये जब मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ ना, मैं इंटरनल कॉन्फ़िगर करता हूँ, इसके अंदर मैं ये बताऊँगा सारी चीज़ें। मैं इसका पब्लिक IP एड्रेस बताता हूँ, मैं इसकी टनल क्रिएशन के वक्त मैं इसका एंक्रिप्शन और हैशिंग मैकेनिज्म बताता हूँ, मैं प्री शेड की बताता हूँ, और मैं लोकल IP एड्रेस स्पेस बताता हूँ कि जी वहाँ जब आप कनेक्ट करने लगे हो एक्सचेंज, मैं इसका जो रिमोट लोकल एड्रेस स्पेस होगी मैं बताऊँगा कि कौन सी है, क्योंकि व्हाट हैपन। नहीं नहीं, ये बेसिकली देखो, ये ट्रैफिक, ये एड्रेस स्पेस है, ठीक है, इसके पीछे it shows कि ये वाला VPN gateway will accept the traffic coming into this for these addresses, right? This is the intent. कोई traffic कहीं से आ रही है, VPN gateway is basically saying I will accept traffic for these addresses if you're able to connect to me. So this is the idea. It is not just random address space. वो बता रहा है कि कौन सी address space मेरे पास है. Configure it in yourself. So if traffic comes to you, you should need to send it to me. ठीक है? इस तरह पोस्टल सर्विस है, उससे पता है कौन सा ब्लॉक है, कौन सी क्या चीज़ है, कौन सा हाउस नंबर है फॉर विच पर्सन एंड ऑल दैट, राइट? सो इट कैन राउट द मेल टू योर होम एड्रेस, राइट? लेकिन वो पहले एब्सोल्युटली वीनेट बनेगा तो वीपीएन अप्लायंस बनेगी, वीनेट बनेगा। देखो वीनेट तो सबसे बेसिक चीज़ है ना, वर्चुअल नेटवर्क, वेदर इट्स ऑन प्रेमिसेस और ऑन एज्योर, वीनेट के बगैर तो कुछ भी नहीं होना। हमने बताया था सबसे पहले अपने नेटवर्क बनाना है, फिर अपने स्टोरेज और सर्वर्स बनाने हैं उसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद ये राउटर्स और चीज़ें लगेंगी उसके ऊपर, ठीक है? तो नेटवर्किंग जो है तो सबसे पहले होगी, ये एड्रेस स्पेस तो सबसे पहले सेटअप होगी, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो दैट इज देयर गिवन, आपने कुछ भी नेटवर्किंग करनी है, अब आपका इंटरनल एड्रेस स्पेस इज गिवन ऑलरेडी, राइट?
No, and should not be, right? I mean, you have to answer it. I will check आपने आंसर कितना दिया है, and you show your understanding, right? मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था, don't concentrate on marks and numbers, concentrate on your understanding. I want to see your understanding. हो सकता है कोई somebody will say in one line, exchange IK parameters, pre-shared key IP address, right? One line with 3 words, right? Maybe I'll give him full marks. I will see his understanding is perfectly fine, right? And somebody can write half. Absolutely, absolutely. There are people who wrote 2 words or 3, 4 words and they got full marks in the quizzes. Absolutely. I'm not concerned. मैं आपको कई दफ़ा कहता हूँ कि write brief and precise answers. Do not write paragraphs. It's not an English paper. मैं कई दफ़ा emphasize, मैं तो ये सबसे ऊपर लिखता हूँ आपकी quizzes के ऊपर भी, right? Write brief and precise answers. So people write paragraphs after paragraphs. This is show your understanding. Forget about how many points are there. You can write these 3 points and all these things in one line. Exchange IK PSK local address space. That's it. 3, 4 words. You are done. Right? But show your understanding, and you should understand these things, right? What you are trying to do. Right? Don't try to memorize. I mean, मैं ये मेरा एक emphasis है इस course के अंदर to all of you guys. Concentrate on the real world aspects of the course. Concentrate on understanding, right? And understand the material from why something is being used, why AVD is being used, under what circumstances. ये मैंने क्लास में आपको बताया था, ACI versus web apps. Both can take containers. Why would you use either one? आपको मैंने container दिया है. Under what circumstances you would pick ACI versus web apps, right? I mean, this is very critical part, right? Why? What are the differences? Web app, fully scalable platform, वहाँ पे scalability नहीं है ACI के अंदर. It runs your container and it can run it nicely. If this is what you want, a simple application running, that's perfectly fine. ACI has no web app, no web servers. You have to deploy web server for your container. अब a simple web app चलानी है, you can do that in container, but you must deploy web server, right? Understand the differences in these things. Don't memorize points 1, 2, 3, 4, this many points and all that, right? I do not score your quizzes and exams like this at all, right? There are people who have written front and back of the quizzes and have got 0, okay? Or close to 0. Anytime you're connecting two networks, you must check for non-overlapping. Azure to Azure, Azure to non-Azure, anytime two networks are being connected, you must check, right? होता क्या असल में, what happens is, जब आप बताते हो ना इसको कि you need to route these addresses over here, right? These, ये information आप इसके अंदर configure करोगे, ठीक है? और ये वाली इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कन्फिगर करोगे. अब लेट्स सपोज कि इसमें से कोई एड्रेस स्पेस इज ऑलरेडी ओवर हियर एज वेल. इट विल नॉट नो व्हाट टू डू. इट विल नॉट गेट राउटेड प्रॉपरली, ठीक है? आपकी राउटिंग यहाँ पे भी हो रही है और आपके अपने इंटरनल भी राउट करना है क्योंकि वो एड्रेस स्पेस यहाँ पे भी है. तो आप जब कोई एप्लीकेशन दैट इज सिटिंग इन दिस एड्रेस स्पेस and it sends sends network or connectivity or whatever request to one of these guys. अगर ये यहाँ पे है, understand the concept, right? Understand the concept. अगर वो address यहाँ पे भी है, you're going to have huge routing problems, right? Because you have address space that is sitting over here and that is sitting over here. So when this address space all becomes one, you have two addresses that can be routed to which are same. That's a huge problem, right? Routing cannot happen, right? The routing will not happen, right? Routers cannot do that. आपको उसका पता है कि मैं दो जगह राउट कर सकता हूँ for the same address, right?
I mean, your packets will drop. You will have all sort of issues. You will have connectivity issues, right? Some packets going over here, some packets going over here, and all that, right? So that's why you cannot do that. It'll cause extreme network instability. So understand the concept, right? When you're connecting two networks, address space, overlapping address space will cause routing issue. Right? It's not about VPN. It's not about Azure. What we call क्या चीज़ थी दूसरी peering, right? So ये points हैं basically, right? And again, understand the concepts, right? All these ones. Once you understand the concepts, things will be very clear. और ये आप read किया करो थोड़ा सा, right? And you can go and read. Spend a little bit of time. These are very real world situations, real world stuff. You'll be doing these things, right? These are the first things that you do in any kind of cloud implementation, VPN connectivity, network setup, and all those kind of things. VNet peering, again, VNet peering is to enable communication, to allow seamless communication between two Azure virtual networks. Requirements to set up virtual network peering. यहाँ पे you can say must be non-overlapping. Why it is must? Because Azure will not allow you to do a connectivity between two Azure VNets if they are overlapping address space. वहाँ पे VPN appliance, since they are remote, they have no clue about each other, right? But यहाँ पे, since Azure controls both of them, it can force you on these things, right? That is one thing. Second, the requirement is they both must be Azure VNets to do peering. Okay. अगला था subnet mask for 27. How many usable bits and IP address? 5. Available range, you have 32 IP addresses. Range is 0 to 31. Okay. तो यहाँ पे था 2 raised to power 5, which is 32, और ये होना था basically from 0 to 31. These are 32 addresses, right? Doesn't matter. I'm not talking about the क्या चीज़ है. Identity में उसका gateway और चीज़ें होती हैं, but I'm not discussing that. I'm asking a pure network question, which is क्या कहते हैं? क्योंकि I mean, from that perspective, 5 addresses in Azure in any subnet are not usable. जब ये subnet में रहते you lose 5 addresses. Last वाला or first 4, 0, 1, 2, 3 you cannot use, and 255 you cannot use. The last one, right? Because of Azure reserves them. Or the 31, you cannot use it, right? तो आपको मिलते हैं उसमें से -4, आपको सही है 27 एड्रेस यूजेबल एड्रेसेस मिलते हैं. बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग what are the IP addresses in that range. That's all I'm asking. So stick to the question, read the question very very carefully so you are clear. Concentrate on what I'm asking. Don't try to answer anything else. ये मैंने क्वेश्चन लिखा था फॉर एग्जांपल वो AKS वाला, वो कंट्रोलर नोड प्लेन वाला. People put half page of what AKS does. I'm not asking for that, and I will not give any credit if you put these kind of things. I'm not asking for it, right? Look at what I am asking for, and then answer it. Save your time, save my time, right? It doesn't take much time. These are literally 5, 6. I give you like 6, 7 minutes quiz, and I give double the time, right? Concentrate on the answer, concentrate on the question, what is being asked. Always be to the point, very precisely to the point, right? So that's all. What is the available range of IP addresses? That's all. I'm not concerned with what is happening from the routing perspective. I'm just saying range क्या आपके पास, वो किस तरह इस्तेमाल हो रही है, that's a totally separate thing. क्या रिजर्व हो रहा है, that's a totally separate thing. I'm just asking a very simple basic networking question. What is the range? That's it. यहाँ पे again we discuss this part. अगर हमने ये था newly created virtual machine.
ठीक है, इसके अंदर था again I mentioned you cannot change the virtual network in the configuration of a VM. You must either delete or recreate the VM. There are three ways, right? मैंने आपको दो basic चीज़ें बताई. This answer is sufficient. You must recreate the VM. You can say this. You can say delete and recreate. You can say you can take a backup and restore the VM on the other VNet. You can say you can delete the VM, keep the disk, create the VM with the existing disk on the new network. You can do all of those kind of things. But a simple answer is you must create the VM on the new network. That one would suffice, right? नहीं है, you don't have to do anything to the VNet. आपको VNet तो नहीं ख़त्म करना पड़ता. VNet क्यों करना पड़ता है? हाँ, मुझे VM डिलीट करनी है और रिक्रिएट करनी है ऑन द न्यू नेटवर्क. सही है. अब ये VNet prod है, मैं VNet बनाऊंगा एंड आई विल से ओके सिलेक्ट द VNet prod नाउ. मैंने गलती से यहाँ पे VNet टेस्ट कर लिया था पहली दफ़ा बनाते वक्त. आई हैव टू डिलीट दैट VM, but when I create the new VM, I'll select this one. Idea is when you have a new when you have select the VNet, you cannot change it, right? So I will select I will make the proper selection. ठीक है. हाँ, वो ये होता है बेसिकली. अब रिक्रिएशन का क्या होता है? अब रिक्रिएट कर रहे हो. अब रिक्रिएट करने के मल्टीपल वेज हैं. ठीक है. एक तो ये है, रिक्रिएट इज अ जेनेरिक वर्ड, राइट? हाउ इट इज रिक्रिएटेड? One way is you delete it and just simply create a new VM. Second way is if you are taking backups of that VM, you can restore from backup and delete the original VM. ठीक है. So that is usually what is preferred in the environments because it's a very big destructive action. वो कहते हैं हमारी virtual machine run कर रही है, how can we prevent this कि हम delete कर दें इसको. तो हम कहते हैं restore करें to make sure everything is okay, then you can delete the VM. So this is what lot of time it is done. The third way is हाँ बैकअप हुआ है ना, सारी VM is backed up, so when you restore it, it is like an identical copy of the VM. ठीक है. Absolutely. So everything what you have is restored over there. और थर्ड वे इज दैट इज अनदर वे. आप डिलीट करो वर्चुअल मशीन को और आपको डोंट डिलीट द डिस्क, उसमें ऑप्शन आती है डिलीट द डिस्क, आपको डोंट डिलीट द डिस्क. और जब नई VM क्रिएट करो ना, आपको जी सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग डिस्क, आप वो एग्जिस्टिंग जो डिलीट किए VM उसकी डिस्क ले लो, तो इट क्रिएट्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ दैट. ठीक है. यू कैन डू दैट थिंग एज वेल, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन इंस्टेड ऑफ बैकअप रिस्टोर. और लोगों ने किया भाई, एक्चुअली दे हैव रिटन स्क्रिप्ट्स टू डिलीट द VM, keep the disk and recreate the VM with the exact same everything configuration on the new network. People have written very very nice scripts in PowerShell and CLI to do precisely that. तो वो दो चार मिनट लगते हैं उसको, but after 4-5 minutes वो एक आपकी exact same VM with the exact original disk is ready on to the new network. ये सेम क्वेश्चन था like the last one. This question is exactly same as this question, right? ये मैंने बताया था, ये ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है. ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ दिस वन, राइट? ये क्लास में मैंने किया था बेसिकली 10.10.0.0/24. 24 के अंदर मैंने बताया था you have 256 एड्रेसेस, सो यू कैन डिवाइड इनटू, अब 2 की पावर्स के ऊपर डिवाइड होना ये. अब मैंने कहा था इसको 3 सबनेट से डिवाइड करना है फुल रेंज को, तो फुल रेंज तो तीन जो होगी वो 2 की पावर के ऊपर होगी. तो अब 128, 64 और 64, दिस इज़ वन कम्बिनेशन. I think what other could be is I think
32, 32, and I think it could be 192 could be happen also. I don't know. I think 192 and 32 and 32. You could do something like this. Any combination you can pick should work, right? So, but important point is आपको you need to understand what is slash 24. How many addresses are there, right? This is 256. और अगर आपके पास calculator है, that you can figure it out very quickly, right? This is 2 raised to power 8, right? या वैसे मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी. It's pretty straightforward, right, to find this out. अब मैं इसको 22 भी कर सकता हूँ, मैं इसको 20 भी कर सकता हूँ. I can do whatever, right, if I choose to give this in the exam. Make sure you understand the concept, right? What is it, right? So 2 raised to power. So first you must understand how many addresses are there. You must figure it out, right? So here you can find out. West it was obvious, right? Because this is 24 means आपके 3 octets are fully occupied, right? 8, 8, 8, 8, 3, 24. आखिरी octet is empty, which is octet is 0, 0 to. अगर आप उस तरह भी देखो, without doing calculation, you can figure it out, right? ये आपके octets होते हैं, each with 8 bits, right? 24 means 8 times 3, 24. ये जो 3 octet हैं आपके, they are gone already. You cannot use them, right? अभी आखिरी जो octet है, this is the only one that can be used. This is 8 bits. 8 bits means you have 255 addresses or 256 addresses right over there, right? So there are multiple ways to find out very easily how many addresses you have. 8 bits and biggest number that can come is 255. So 0, 255, 256 addresses you have available. उसको आपने डिवाइड करना है, उसको जिस तरह भी डिवाइड कर लो आप. दिस वॉज ये मैंने क्लास में भी करके आपको दिखाया था वैसे. There could be other combinations as well, I'm not sure, but this was the simplest one basically. ये 64 is how much? So 128 is slash 25. आपने इसको basically इसका answer was this, right? इसका answer was 10.10.0.0 slash 25, and then it was 10.10.0 dot what? 128 that 64 and 10.10.0.192. Sorry, not 64, 26. Oh, it is 26. It's 26, okay. This was the answer to this one. So understand this. हमने क्लास में काफ़ी टाइम लगाया था इन चीज़ों करने के ऊपर. You need to understand this was the answer that I was looking for in this question. 120/25 नहीं, this is 64 addresses है ना इसके अंदर. 25 तो नहीं आ सकता. 25 के अंदर 128 addresses हैं. तो पहला जो है 128, this is /25, right? अब 128 के अंदर आपके 64 addresses हैं, so this is 26. ठीक है? And you can check it also, right? 26 means कितनी bits इस्तेमाल हो गई हैं आपकी? आपकी 6 bits remaining है. 2 raised to power 6, right, which is 8 times 8, right, 64. It's all mathematics, right? Nothing to even assume or anything. So आपके 64 addresses and this will be 2 raised to power 6, 26, right? Because your remaining bits are 6 bits. 2 raised to power 6, which is 64, right? So 128 to 190, 128 to 191 is 64 addresses which a 26 range will hold. यहाँ पे आप इसको फिर से पावर 2 वो कर दो, क्या कहते हैं, अगर 2 की पावर 7 है, राइट? अगर 2 की पावर 7 है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट वन, जो पहला वाला हमारा, क्या है?
कि जब हम रेंज लिखते हैं ना, रेंज, हम उसको स्टार्ट देते हैं बिकॉज दिस विल डिफाइन व्हाट द एंड विल बी। ठीक है, इससे स्टॉप तो इससे करवाना है। क्या कोई कितनी रेंज है, स्टार्ट आप बता दोगे कहाँ से स्टार्ट होना है। तो ऑलवेज एड्रेस स्पेस इज स्टार्टिंग and then the subnet mask defines where it will stop. This question is same as before, nothing really special. No, not at all. This is not the subnet mask is this, or you have to provide me subnet mask properly, right? You have to give me the address space range. This is not क्या कहते हैं, again it's again straightforward, right? ये वाली चीजें जो हैं, you need to understand the subnet mask. You need to understand, right? आपकी bits कम हो रही हैं, you need to understand how the bits are being played out, right, over here. It's absolutely critical. Iska the other way of looking at, which is again, I don't want to go into that, it might get a little bit confusing, extra piece of information. Just stick to this one, how it is, right? यार आप 128 में ना 64 ऐड कर लो। जब मैंने ये कर लिया कि मैंने ये डिवाइड करनी है, तो 120 प्लस 64, if this is a starting one, it should go to 191. 128 अगर स्टार्टिंग एड्रेस है, वैसे तो 128 प्लस 64 करोगे, इट्स 192, राइट? बट सिंस दिस इज माई स्टार्टिंग एड्रेस ऑलरेडी, बिकॉज इट्स जीरो बेस्ड, राइट? दिस वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो 25 जो है, दिस गोइंग फ्रॉम जीरो टू 127। सो ये 128 एड्रेसेस हैं, इट्स जीरो बेस्ड, सो इट गोज फ्रॉम जीरो टू 127। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, these are all जीरो बेस्ड। ये आपको स्टार्टिंग एड्रेस दे रहा है ऑलरेडी, ठीक है? तो यू मस्ट काउंट दिस इनटू द योर मैथ्स। सो अगेन इट्स ऑल पावर ऑफ टू, all power of 2. Understand this basic thing, right? Starting address will always be power of 2. हाँ जी। नहीं, क्या लिखना चाह रहे हो, कहाँ पे? मैंने कहा। हम्म, हम्म। देर इज नो डिवीजन, राइट? मैंने जो, हाँ, अगर मैं कहता, आप एक, अगर क्वेश्चन वाज कि क्रिएट अ सबनेट that encompasses the whole range of the IP address of the VNet, yes, you can say 10.10.0.0/24, ठीक है? हाँ, अगर मैं कहता आप एक सबनेट बना दो इसका, यस, यू वुड हैव डन एग्जैक्टली, कि आप उसको, आप जो सबनेट है, आप उसको वही दे देते, ठीक है? क्योंकि आपको सबनेट लाजमी बनाना होता है वीनेट के अंदर, और जनरली एज्योर एक डिफॉल्ट के नाम से सबनेट बनाता है, आपको ऑप्शन देता है बनाने की, विच डज दिस वन, राइट? हाँ, अगर आपको यहीं पे, अगर आपको यहीं पे, फॉर एग्जांपल, राइट, सो लेट्स डू अनदर वेरिएशन ऑफ दिस वन। मैं अगर आपको ये सवाल देता, ठीक है, एंड आई विल से 25, 25, ठीक है? नाउ यू हैव ओनली 128 IP एड्रेसेस इन दिस वन, ठीक है?
अब लेट्स डू द सेम क्वेश्चन ऑन दिस वन, ठीक है। मैं कहता 3 में डिवाइड कर रहे हैं, आपको जो 64, 32, 32, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ये करूंगा 10 10 0 0, मैं इसको कहूँगा 26, you know that 26 is 64 IP addresses, right? इसको मैं कहूँगा 64 बिकॉज इट वेंट फ्रॉम 0 टू 63। यहाँ पे मैं कहूँगा अब 27, और यहाँ पे मैं कहूँगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका, इफ आई डू दिस। जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं, लाजमी बात है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट इतना दिया गया हुआ है, ठीक है। और 128, क्योंकि इसके अंदर नाउ यू कैन हैव ओनली 128 एड्रेसेस, राइट, दैट मीन्स इट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस। सो दिस इज फाइन। अब यहाँ अगर ये है क्वेश्चन, सो सॉरी मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया आपको, ये अब ये होता है 128 एंड इट विल बी 128 से you have 128, you have 192, and then what, 220 something, 231, ठीक है, 231, 192 plus 32, 230, 234 हो जाएगा, ठीक, 20, हाँ सही है। तो प्लस 224 plus 32 is 256, so which is 255 because it's zero based, right? हम ये add already पहला IP address है, so it will be 224, right? So it will be like this, absolutely. बट ये इसकी बड़ी सिंपल मैथ्स है, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इज सिंपल मैथ्स, इट्स आपने बस ये बिट्स देख लो कितनी है, इट्स बिट कैलकुलेशन हो, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, फ्रॉम बोथ वेज। और जनरली ये दो चार जो है ना, 24 25 26 27, यू कैन जस्ट मेमोराइज, राइट, 24 दिया हुआ है आपको क्या है एंड ऑल दैट, बट रिगार्डलेस इसमें मैं आपको कुछ और नंबर भी दे दूं, जस्ट गेट द नंबर ऑफ बिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बिट्स, 2 की पावर रेस करो, मैं आपको 220, मैं लेट्स सी 23, राइट, व्हाट इज अगर 23, अगर मैं विच इज, अगर 24 255 था तो 23 हो जाएगा 512, ठीक है। आई मीन इफ यू कीप 24, इवन वन यू मेमोराइज, कम करोगे ज़्यादा करोगे पावर, राइट, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिट्स इंक्रीज करते जाओगे। मैं अगर आपको कहूँ, सो फॉर एग्जांपल राइट इन दिस वन, सो अंडरस्टैंड दिस 24 is 256, राइट, स्लैश 24 is 256, राइट। अगर मैं कहूँ स्लैश 23, देन दिस इज 250, 24 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 512 हो जाएगा। मैं कहूँ स्लैश 22, क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, ठीक है। आप मेक दिस अ सेंट्रल पॉइंट, 24 256, 23 आ रहा है, 22 आ रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। आई मीन इट्स वेरी सिंपल, राइट, मेक इट सिंप्लीफाइड। ये अपने थिंक इन योर माइंड कि मैं इसको किस तरह कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ। और अगर मैंने 25 आ गया, मैं उसको 2 से डिवाइड करता जाऊंगा, ठीक है, मेरा 128 हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा 20, अगर 6 है कितना हो जाएगा मेरा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप पकड़ लो इसमें से, जो अगर ये नंबर कम हो रहे हैं मास के, दैट मीन्स यू हैव एक्स्ट्रा बिट्स एंड 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। मास बड़ा होता जा रहा है, दैट मीन्स मोर एंड मोर बिट्स आर बीइंग मास्क्ड, यू हैव लेस बिट्स टू प्ले विद, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, 2 से डिवाइड करते जाओ सारी, और एड्रेस कम होते जाएंगे।
हाँ, अब यहाँ पे वही देखते जाओ, मेरा अब ये यूज़ हो गया, मेरे आगे क्या आएगा उसके बाद, ठीक है, व्हाट कैन हैपन, राइट। तो आप, आई मीन देयर मल्टीपल वेज टू लुक, बट मेक द पिक्चर इन योर माइंड, हैव डेवलप एन इंट्यूशन, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये ड्रेस स्पेस है, एवरीथिंग इज वर्किंग अराउंड पावर्स ऑफ टू, राइट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यार वैसे तो कोर्स मटेरियल के अंदर मैंने सारा डाला हुआ है, शुड नॉट बी मच डिफिकल्ट, अगर मैं देखूं यहाँ पे कोर्स को, लेट मी जस्ट सी। I mean, I think it's a bit late right now, but yes, right, you should understand these things. इसीलिए that's the whole purpose of quizzes, right, कि आपको things don't stack up, right? Because एक practical course है ना, again, and lot of information is coming, and each thing is building on the other thing. But but again, I try not to trick too much. मैं अगर if you follow what I do, right? There are, हम slides के ऊपर जाते हैं, and there are some aspects, for example, certain things in which there's minimum information in the slides, expect some stuff to come from the, क्या कहते हैं वहाँ से, from the notes, from the links, right? मैंने AVD का आपको links दिए थे, मैंने ACI के links दिए थे, web apps के links दिए थे, and those kind of points. But and जो मैंने 8 points थे उसके cloud के functionality के, वो मैंने दिए थे, and I asked you those things in the quizzes as well, right? So make sure you do those kind of things, right? Uh, uh, you, I think that's the whole purpose I'm doing the review, right? So whatever you studied, I'm just reinforcing some critical points. But you should know in and out your quizzes. Quiz करोगे, you will have the, I mean, quiz covers pretty much everything what we have studied, right? मैं तो इतना एग्जाम में कवर भी नहीं कर सकता, right? But I will not give you anything more than what this one is, right? To do. मेरा तो whole purpose है, which is to help you understand and do good in the exams, right? So there's a very specific reason I'm doing this, this review and concentrating on importance points, right? So you guys are smart. You should be able to pick from all these things what I'm saying and telling you to, these things, right? But not really. अगर quizzes कर लेते paper हो जाता, then I would not have done the review, right? You did the quizzes. I went over the quizzes. I would have, finished. I would have not done any further things, right? So I'm going into a lot of details on critical points. तो again मटेरियल के साथ साथ मैं शुरू में बता रहा हूँ, आई विल डू द क्विजेज रिव्यूज नाउ इन द क्लासेस। आई मीन क्विजेज इज प्रीटी मच जो हमने सारा कवर किया हुआ, राइट? 4-5 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एंड देयर मल्टीपल वेरिएशंस एंड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड इन द क्विज, राइट? And the intent is not to fail you, intent is not to put you in a difficult situation. Intent is that you go through different variations, so these things stick to your mind, right? जो कई दफ़ा करवा रहा हूँ मैं आपको हर तरीके से, from every angle, right, is to reinforce these learnings, right? As in engineers understand this concept, and once you understand and go through these things, I mean, exams, you should do very well in the exams, right?
But I mean, if you're focused on, yes, I mean, ये reviews जो भी हैं, I do it very specifically, and you will see the values also, right? From learning and from exam perspective as well. So concentrate on these things, what we're doing. Uh, uh, beside this, I think the last thing I can do, give you anything more, is the exam itself, right? Show you the exam itself. So, I mean, understand and make sure you, I mean, these points are quite a bit for you to go over, right? But main thing is learn the quizzes, go in and out of the quizzes, right? And the material. अब जब ACI की quiz कर रहे हो, make sure you go over it, right? Go over the material again and again, right? ACI में और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आ सकती हैं उसके अंदर. There's not too much. Class के अंदर I covered couple of more things, but I've asked the question 2-3 different ways, right? Understand that, right? All these things are to reinforce your learnings. And from numbers and exams perspective, there's not too much beside it, right? Of course, I will still push you from certain things, but आप quiz कर लो अच्छी तरह, आपको सारे versions कर लो, and करने का मकसद ये है कि you go over the material, you understand the material. अब मैंने आपको जो सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ, मैं घुमा फिरा के वही चीज़ें पूछ रहा हूँ. I'm coming from different angles, so you understand. मैं आपको किसी तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ, किसको किसी तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ. But the point is, these are all part of my quiz post की है मैंने, right? All of them. You have all of the quizzes right after I give you the quiz, right? So that's all. So I mean, you will be fine if you go over these things, what we are covering and what the quizzes are and what you're covering right now. Yeah? You will be just fine, inshallah. नहीं नहीं, वर्जन्स की तो कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट, यूनिवर्सिटी के अंदर. So I have to give one exam for both sections. All my sections have same exam, right? It could be that कि मैं exam separate कर दूँ later on. Maybe if I separate the course material for BCS and BDS, right? But so far it's one exam, just one exam. क्योंकि exam banana itself is a very difficult thing when you have this much material to study from quizzes perspective, this much material to go over, right? So usme to pick up these things, right? So what discrimination about you should be discriminated? No, there is no discrimination, right? In the quizzes, I do discrimination a little bit, right? You get different things. Some guys are lucky, maybe, but if you study, I think everyone, you know, uh, इसमें. And then you'll be fine, inshallah. Go over the quizzes, go over what we are doing, you'll be fine, inshallah. नहीं नहीं, आपका section is specific to what I'm teaching you, because I'm not sure other instructors are teaching, similar or whatever, right? They could be teaching very differently. मैं फील्ड में हूँ तो my concepts are very different. My teaching style is very different. अच्छा, is it मेरा कम है, ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा है? What we are doing, we're doing advanced or less advanced? I mean, AWS is not the issue. Azure is not the issue. I know mostly every instructor over here teaches AWS, but the point is the coverage of the breadth of the material and breadth of the how much deep somebody is going, right? This is the तो ये networking था. I'm going over the networking. Let me just open the networking part again, right? हाँ, ये /27 वाला. हाँ यार, it's very similar to the, ये तो क्वेश्चन प्रीवियस वाला है ना, ये वाला. It is same one as this one. मैं आंसर दे देता हूँ मैं आपको. बेसिकली we have covered this one in great detail already. यहाँ पे देखो वो कह रहा है 27 सब्जेक्ट मास का है, ठीक है. अब 27 सब्जेक्ट मास का है. यूजेबल बिट्स कितनी है आपकी? टोटल यूजेबल बिट्स आपकी 32 होती हैं आईपी एड्रेस के अंदर. यूजेबल बिट्स आर 5, राइट? तो आप ये इस पे लिख देते हैं आंसर A is 5.
B is, for example, a range of available IP addresses, right? 0 to 31. That was the answer to this question, right? That's all, right? So you'll get full marks if you say this thing. Yeah, we'll go. I mean, हम final उसके ऊपर ही हैं. I'm gonna cover that one, right? मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर. नहीं नहीं यहाँ पे I'm not वो मैंने पढ़ा है सही तरह. हाँ वो मैंने पढ़ाया नहीं है. आई जस्ट मेंशन इट ब्रीफली. मैं जब तक चीज़ को डिटेल में बताऊँ ना कवर ना करूँ आई विल नॉट आस्क यू राइट फॉर दोज थिंग्स. I will show you, I will do it, I will go over it completely before I give you these things, right? वो it's more right now I'm concentrating on कि आपकी networking part is very clear. वो जब उसके अंदर जाओगे आप you will understand. वो आपको कह देगा आपकी usable address is this much and you know those some intricate details you can get over there. I'm not bothered with that one right now. Right now this is the critical part that you understand how you want to play with subnets, networking. और still I understand right. ये मैंने लास्ट टाइम इसकी मैंने 2 दफ़ा क्विज दी थी. अभी मैंने चेक नहीं किया. I didn't have time. ये मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह this week. But ये मैं चेक करूँगा. But last time people did really really bad in the networking quiz, right? मैं देखता हूँ इस दफ़ा क्या होता है. ये मैंने लास्ट टाइम 2 दफ़ा पढ़ाया था ये टॉपिक और मैं 2 दफ़ा क्विज दी थी इसकी. I simply just removed their first quiz और उसके अंदर मैंने दूसरी दफ़ा क्विज दी थी. Because I was expecting a networking was should have been studied, लेकिन it seems like it was one of the weakest areas, right, with the students. So this was the answer to that. नहीं तो बड़ी बेसिक है. अगेन ये मैथमेटिक्स इसकी समझ आ जाए थोड़ी सी. आई थिंक दैट्स ऑल देयर दैट इज नीडेड राइट. दैट्स ऑल. तो अगेन अगेन एक चीज़ में बार बार अगेन आई विल एम्फसाइज बी ब्रीफ. ये देख लो आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ आंसर्स. जहाँ पे यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ आंसर दैट्स व्हाट यू नीड. उसके अंदर जो था डिवाइड दिस वन आपका ये आंसर है राइट. राइट. आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट डू दिस राइट. दैट्स ऑल यू नीड. बट अगेन देखो इस चीज़ तक पहुँचने के लिए your concepts needs to be strong, right? So when I'm saying these ones, if your concepts are strong, you'll give precise answer. You don't have to spend time too much, right? So again, be precise wherever you can. When you understand the area and topic, be precise. Show your understanding, show your concepts. That's it, right? That's the fundamental thing. This is what matters in the field as well, right? You need to understand आप ये चीज़ क्यों पिक कर रहे हो. हमारी कई दफ़ा रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर दे आर आस्किंग राइट. कस्टमर विल आस्क यू आई नीड टू डू दिस राइट. वहाँ आपको ना आपकी लंबी चौड़ी डिस्कशन की ज़रूरत होती है. आप कहते हैं यार ओके फॉर दिस सिचुएशन योर सिचुएशन आई थिंक वी विल चूज ACI. वो कहता है मैंने बैच जॉब बनानी है. आई वांट टू रन दिस एंड वी कैन कंटेनराइज इट. You can say, okay, we can containerize it instead of doing this bad job because container can restart your job or if it fails and all that, right? So it'll be a very simple and cheap solution, right? So this is the kind of things that you need, that you need to have these things in your mind. हम ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. Why not somebody else? Why something else? Why not AKS? Why not web app, right? वहाँ पे भी web jobs हैं. Why? I don't need to scale. I just need to run this job. Okay, containerize it and put it in ACI. You are done, right? If it fails, it will rerun. You can monitor and do all of those things, right? So ये सारी चीज़ का जो concept है, right? It's about this to reinforce this again, again and again. नई चीज़ है, and this is one of the learning methodologies, right? कि एक चीज़ hits your cognitive system from multiple angles. You see it also in the demos in the class, right? And then it just reinforces this thing, right? और ये हम बार बार quizzes, multiple versions of the quiz and review sessions, so it sticks to the mind, right? And you study it yourself, of course, right? So critical points are main चीज़ है कि आपको you don't have to remember and memorize everything, right? Main चीज़ है when you
critical points that you leave this course, right? That's the critical and important point. इसके अंदर लॉन्ग डिस्कशन है वीपीएन के अंदर, राइट, बट हम वी नीड टू स्टिक टू वेरी वेरी बेसिक, आपको क्या चीज़ चाहिए, राइट. Anyway, let's continue. Express route we discussed, right? Private connectivity and इसके अंदर मैंने यहाँ पे let me see if we did something in the express route. ये हमने इसके अंदर किया था. Express route. So partner connectivity, private connectivity, private network है, and the difference between express route versus VPN is express route is a privately leased line. आप कितनी लाइन होती है? Data goes over a private network. It doesn't go over public network. VPN के over it's encrypted, but it goes over public network, right? Here it goes over private network. Or of course it's not a pros and cons, but it is pretty expensive when you're leasing a dedicated line from here to all the way to Azure network, right? और इसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट एज का खसूसन बताया था, विच इज़ कि आपका ये माइक्रोसॉफ्ट जो है, अगर डेटा सेंटर नहीं है आपके पास, इट कैन प्रोवाइड यू अ राउटिंग फैसिलिटी इन योर कंट्री at maybe near your sea cables and all that. And Microsoft will run the cables from their edge network to the data centers, right? So आप यहाँ तक बना दें उसको, लेट से कराची के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर सी साइड है, वहाँ पे कराची के अंदर दे कैन मे बी दे कैन प्रोवाइड एन एज नेटवर्क, राइट. तो हम PTCL से अपने PTCL से हम ले लेंगे लाइन अप टू Microsoft Edge, and from there on Microsoft will have complete your Microsoft network to go to any one of these clouds, right? यहाँ पे CRM है, Dynamics है, and to the Office network, Office data center, right? So that kind of thing, you have very reliable connection. You have reliable, a very specific, the minimum possible latency, which doesn't fluctuate, and it's private network, right? Understand these critical points, how it is made, and what are the benefits, right? Microsoft Edge जो है, that is, you can say it's like Microsoft का डेटा सेंटर है, Edge डेटा सेंटर है, which is a very minimal thing. इसमें सर्विसेज नहीं होती, इसमें सिर्फ नेटवर्किंग एंड राउटिंग फैसिलिटीज हैं. You can connect to the Edge network and it will connect you to the Microsoft data center, right? अब हमारे पास जो सबसे करीबी डेटा सेंटर है, that is sitting in Dubai. So think about it, Edge network will be in Karachi, जिससे हम पूरी लैंडलाइन लेके आएंगे यहाँ तक, तो हमारा फिजिकल नेटवर्क यहाँ से होगा, और यहाँ से आगे का जो फिजिकल नेटवर्क है माइक्रोसॉफ्ट खुद हमें दे देगा, ठीक है. सो दैट्स द बेनिफिट. वो पूरी डेटा सेंटर तो नहीं है, बट वी आर एबल टू गेट फुल फ्लैज कनेक्टिविटी टू द डेटा सेंटर्स थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट एज नेटवर्क. तो कई कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज वेयर दे डू नॉट हैव direct connectivity to the data center, they provide you edge networks, so you can have direct connectivity to the data centers, right? That's the idea. Similar, right? Very, very, very close, right? They are on the same physical network. Absolutely. उसमें भी आपको वैसे गेटवे बनाना पड़ता है एक्सप्रेस राउट का. आई डोंट गो इनटू द डिटेल्स. कुछ कनेक्टिविटी करनी पड़ती है बिकॉज यू आर पासिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अदर वन, बट रिगार्डलेस उसके अंदर थोड़ी सी कन्फिग्रेशन होती है मिनिमल, बट रिगार्डलेस वो अब इट्स बिकम्स लाइक अ वन फिजिकल नेटवर्क, राइट? वन फिजिकल. वीपीएन के अंदर साथ, because it's all physical. Virtual network के अंदर we connect over internet where there is no networking, but you create a tunnel over internet. It's a virtual tunnel, right? It doesn't exist physically. यहाँ पे you have a cable running physically to these places, right? वहाँ पे connectivity is happening to appliances which are connecting over internet, right? That's why it's VPN, virtual private network. True? It's not Azure Networking Services, Express Route, right? Express Route, very specifically.
Yeah, it's part of network services, but the difference will be between VPN and express route, and you should be very clear on these points, right? What is VPN? What is express route, right? तो यहाँ पे जो है ये उन्होंने बताया हुआ डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉलोइंग सर्विसेज इन ऑल रीजन, राइट? डायरेक्ट एक्सेस VPN में इस VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट नेटवर्किंग आपकी हुई हुई है उनके साथ, ठीक है? ग्लोबल रीच का मैंने आपको बताया था, ग्लोबल रीच इज एसेंशियली आपके अगर दो डेटा सेंटर्स हैं इन टू डिफरेंट रीजन, यहाँ पे लंदन है विच इज़ यूके रीजन, यहाँ पे यूएसए रीजन है, ये एक्सप्रेस राउट से दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं अपने अपने एजोर के साथ, ठीक है? अपने अपने एजोर रीजन के साथ, ये यूएस वेस्ट के साथ, यूके साउथ के साथ कनेक्ट हुए हैं एक्सप्रेस राउट. Now these guys need to exchange data among themselves. These guys. तो वो कहते हैं कि don't use your own networking, don't no need to. You can use the express route network that you already have to exchange the data. This is the beauty of this one, right? Again, the problem statement. ये माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ किया हुआ है, नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स कि किस तरह हाउ माइक्रोसॉफ्ट इज राउटिंग इट, बट यस दे हैव बेसिकली दिस इज देयर व्हाट वी कॉल क्या कहते हैं उनकी डेफिनेटली कोई ना कोई सम कनेक्टिविटी होगी यहाँ पे सम कनेक्टिविटी होगी, और देन इट इज ऑल माइक्रोसॉफ्ट का अपना नेटवर्क है. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज राइट कि हर शहर के अंदर फॉर एग्जांपल वहाँ पे तो किया हुआ उन्होंने, बट दे मस्ट हैव, आई विल चेक एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, आई नेवर रिसर्च. और ये वो एरिया फॉर एग्जांपल वेयर सऊदी अरब के अंदर इट डजंट एग्जिस्ट, राइट? इट्स it's a huge investment from the telecom providers and from Microsoft, right, to do these kind of express route. और एक्सप्रेस रोड वहाँ पे अभी तक मेरा ख्याल है 1 or 2 कस्टमर्स आर देयर, तो मेरा भी इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है इसके साथ एक्सप्रेस राउट के साथ. आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च फॉर कस्टमर्स, राइट, डिड लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर कस्टमर्स who said we want to look into express route. So we did lot of investigations, how work and all that. But the cost is so much that generally people don't bother about these things, right? Now, the important this one, right? Azure DNS. DNS में जो मैंने बताया था, it's a first class Azure service. When you say first class service, the PaaS service, which is completely, I mean, adhere to all the Azure norms and procedures, right? Role-based access control, resource manager, logging, monitoring, everything, right? First class service, which is a inherent thing in Azure, right? Inherent thing in Azure. Nice thing in this one is not only it allows public connectivity, it allows private connectivity, private resolution. और मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि there are two kind of record, there are multiple record types, right? तो यहाँ पे आपने जो important चीज़ देखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने जो क्लास में किए हैं record types, there is alias record, a record, and you need to understand the usages, right? A record is used for mapping what, an IP address to a name, and CNAME record, which is canonical name, it is used to map an existing domain name to a new name. There are other modalities around these things which I'm not concerned right now, but main thing is to understand क्योंकि क्या होगा आपके पास आएगा and you can go and tell your guy, please I have this IP address, please create a CNAME, I mean clear alias record or a CNAME record for this one, right? You need to understand this basics, right, कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. इसमें जो important चीज़ that we spend lot of time is the in your virtual networks how resolution works. So please understand that point. That is critical. तो public के लिए it works out fine, but internal के लिए this is the critical piece, right? I mean, forever we've been using a DNS service which is based on our DNS server in Windows, ठीक है, या Linux के अंदर.
तो उसके अंदर अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा था हाउ इट इज़ डिफरेंट, तो वो कहता है इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस सेकंड पॉइंट, राइट? दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? It provides you DNS services without the need to configure a custom DNS solution. Azure का जो DNS server है, you don't have to set it up to provide DNS resolution if you're doing this. ठीक है? आपको PaaS सर्विस मिल रही है to do these things. और हमने इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, ऑटो रजिस्ट्रेशन. अब ऑटो रजिस्ट्रेशन आप करोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपकी VMs will get added to the DNS zones, right? DNS records automatically add होते जाएंगे. So it makes your life very, very easy from that perspective. So yeah. देखो, फर्स्ट इज IS वर्सेस PaaS, ठीक है? एक तो वो आप अब ये PaaS सर्विस मिल रही है आपको. देन इफ यू लुक एट फ्रॉम प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव, राइट? प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव, आपके समटाइम्स अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू स्टिल ब्रिंग योर DNS सर्विस, राइट? बट व्हाट यू डू इज फॉर द न्यू स्टफ यू कैन क्रिएट योर ओन DNS जोन्स. एंड ऑल्सो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी इसके अंदर, राइट? व्हेन यू क्रिएट ए DNS जोन, it allows you to create a internal domain name. हमने जो बनाया था csfast, cs47.fast.local, तो आपको एक न्यू सब डोमेन बनाने की आपको मिल जाती है, the way you do it, right? So instead of managing them in your DNS server, you can manage them in DNS zone. Again, I'll keep things simple. Right now, it is giving you a PaaS service for what you were doing previously, right? वही मैनेजमेंट, आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है? आपको बैकअप्स और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती टू मैनेज द वर्चुअल मशीन एंड ऑल दैट, राइट? वो चीज़ें हैं. एंड जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए थे, दोज आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल, राइट? ऑटो रजिस्ट्रेशन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, एंड द रेजोल्यूशन, हाउ रेजोल्यूशन हैपन्स, राइट? ये मैंने आपको बताया था, यू कैन हैव मल्टीपल वन एंड मल्टीपल, यू कैन हैव record sets, right? Why there are multiple record sets, we'll go into that one as well. Again, flow it logically. यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये Azure DNS zone है, आपकी प्राइवेट DNS zone है, जिसका नाम contoso.lab दिया हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये वाली VM थी, इसका नाम था DB. When it came on the network, इसने ऑटो रजिस्ट्रेशन थी, उसने ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लिया इसका नाम और IP एड्रेस, राइट? तो यहाँ पे उसने कहा आई वांट टू, दिस VM सेड आई वांट टू कनेक्ट टू db.contoso.lab. DNS ने उसको इंटरनली प्राइवेट IP दिया एंड इट कनेक्टेड, राइट? दिस हाउ द रेजोल्यूशन हैपेंस, ओके? तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कह रहे हैं, तो record टाइप जो A record है, C name है, and all those things, you can do all of them, and there are other ones as well which I don't want to go into. Custom DNS solution, that means जो VMs जब जो भी कर रहे हैं आपको, you don't have to do that. ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, आपकी VM ऑन नेटवर्क आई, आपने उसका ऐड कर लिया, आपने वो डिलीट किया, इसने ऑटोमेटिकली डिलीट कर लिया, VM का IP एड्रेस चेंज हुआ, इसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर लिया, राइट? ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होती हैं. और ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन है बिटवीन VNets, राइट? ये तो भी हमने सिंगल VNet है. अब अगला वाला जो है हमारा वो VNets के साथ होगा, अगली एग्जाम्पल. एंड योर ओन कस्टम डोमेन नेम्स, हमने बनाया था यहाँ पे contoso.lab है, यू कैन डू वॉट एवर. हमने जिस तरह csfast.something.local कर लिया था, राइट? वी डिड ऑल ऑफ दैट. यहाँ पे 2 VNets हैं, इट कैन रिजॉल्व अराउंड दीज थिंग्स, राइट? यहाँ पे VM है, उसने अपना रजिस्टर किया. और ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी, राइट? कि फॉर दिस, ऑल ऑफ दिस टू वर्क, रेजोल्यूशन टू वर्क, यू मस्ट क्रिएट द लिंक, राइट? You must link the VNet with the zone. Right? This is a critical point. Please don't miss this one. How does thing happen? और ये जो record management बताता है, you need to understand this one, right? इसके अंदर, ठीक है? Across virtual networks are resolved. यहाँ पे भी है. यहाँ से VMs are over here, so this can connect to over here, this can connect to over here. ये तो भी यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर ये बताया हुआ कि this guy is connecting to this, but resolution works across all of these guys.
यहाँ पे मैंने एक सवाल किया था आप लोगों से क्लास में कि विल VMs in this network VNet 1 will they able to connect to VNet 2, right? And no, they cannot connect. Why? Because the VNets are not peered, VNets are not connected, right? So this is critical point for you to keep in mind. Because VNets are not connected, right? They are not peered or they don't have VPN connection, right? But resolution is different than connectivity. Resolution तो हो रही है because they are all connected to the same DNS zone. I can resolve all of these IP addresses, but connectivity is a totally different thing. Connectivity requires the VNets to be connected. Just because you're able to resolve doesn't mean they're connected, right? They're two independent things. Clear? अभी के पहले से आवाज कट रही है. अच्छा. हाँ, इसके में मैंने बताया था कि just because they're resolving and just because a DNS zone is connected to both VNets does not mean that VNets, the VMs in VNet or the resources in one VNet can connect to the resource in other VNet. ठीक है? Because for the connectivity to happen, what must happen? Either the VNets must be peered or the there must be a VPN connection. Some sort of connectivity must be there, right? But DNS resolution doesn't fulfill the conditions of or doesn't necessitate कि connectivity भी है, right? क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि DNS zone जो है, you can create links to multiple VNets. You can do auto registration, and all the VMs and resources in the VNets can connect to the can register with the DNS zone. But connectivity is altogether a different thing. And हमने कहा था for these guys to be able to connect, you must peer them or you must create the VPN, right? VPN and in this one, when I say VPN between two Azure VNets, this is basically in the situation where the other VNet is not under your control. Third party vendor है, उसका network है, वो कह रहा है I will not do peering, you must do VPN, right? So we do VPN. But just something to keep in mind. The idea is in this situation, यहाँ पे uh, you must have connectivity between the VNets. Continuing from मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको सही तरह आप लोगों को? मेरी पहले कनेक्टिविटी ओके थी कि पहले भी नहीं खराब, पहले भी खराब आ रहा था? होल्ड ऑन, लेट मी जस्ट सी. मे बी बच्चे कुछ गेम्स वगैरह शुरू कर दिए किसी ने, आई डोंट नो, लेट्स सी.